So, in this video, we will be talking about kingdom Monera. As we know, the main members of this kingdom are bacteria. So, bacteria are the main member of kingdom Monera. They are unicellular prokaryotes. Now, prokaryotes mean they don't have well-developed nucleus and unicellular, so they are unicellular prokaryotes. मोनेरा में कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है. It includes all bacteria, mycoplasma, actinomycetes, blue-green algae and rickettsia. So Monera includes bacteria, mycoplasma, actinomycetes, blue-green algae and rickettsia. Most extensive metabolic diversity and maximum nutritional diversity found in kingdom Monera. Maximum nutritional diversity means Monera में heterotrophs भी मिलते हैं, autotrophs भी मिलते हैं. अब autotrophs में photosynthetic autotrophs भी है and chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs बस Monera में ही मिलते हैं और कोई kingdom में chemosynthetic autotrophs नहीं है. Now, next is shape of bacteria. This is spherical shaped. Spherical shaped bacteria को कहते हैं coccus. Coccus. Spherical shaped bacteria is coccus, and the example is streptococci. Example is streptococci. Streptococci is chain-like. Streptococci is chain-like. Where Staphylococci is cluster-like. Staphylococci is cluster-like. Next is rod-shaped. Rod-shaped bacteria को कहते हैं Bacillus. Rod-shaped bacteria को कहते हैं Bacillus. Example Bacillus के E. coli. Coma-shaped. These are called Vibrio. Coma-shaped bacteria को कहते हैं Vibrio. And the example is Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Now spiral shaped. This is spiral shaped bacteria को कहते हैं Spirillum. Now next is classification of Monera. Archaebacteria and Eubacteria. अब आर्कीबैक्टीरिया क्या है वो देख लेते हैं. What is आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं. एंशिएंट क्योंकि इसमें प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें. आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो है प्रिमिटिव. डिफरेंट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देन यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया से इसके सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है? इसका सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड. प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड. नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड. लेकिन यूबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो यूबैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. इसका एक और यूनिक फीचर है वो है 16S rRNA. 16S rRNA make archaebacteria unique. They can live in most extreme habitats. Most extreme habitats means जहाँ पे हम लोग या फिर कोई भी और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं. ये मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स क्या होते हैं? जैसे कि लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, लो पीएच, लाइक हैलोफाइल्स,
थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथानोजेंस। अब ये हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज हैलोफाइल्स। व्हाट इज हैलोफाइल्स? हैलोफाइल्स मतलब they live under extremely saline और salty conditions। salty conditions में भी हैलोफाइल्स सर्वाइव कर सकते हैं, और डीप सी। एग्जाम्पल ऑफ हैलोफाइल्स, हैलोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल ऑफ हैलोफाइल्स, हैलोबैक्टीरियम। नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो से ही पता चल जाते हैं कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड एसिडो मतलब पीएच क्या है, पीएच में डिपेंडेंट है। दे लिव अंडर एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशंस। हॉट एंड एसिडिक कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग्स। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोकॉकस। थर्मोकॉकस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट, मिथानोजेंस। मिथानोजेंस, they live under anaerobic conditions। anaerobic conditions में भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। anaerobic condition means ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट। इसीलिए मिथानोजेंस को क्या कहते हैं? मिथानोजेंस को ऑब्लिगेट एनारोब्स भी बोलते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब ये ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है? व्हाट इज ऑब्लिगेट एनारोब्स? An anaerobes does not require oxygen and live in only anaerobic environment. Methanogens anaerobic environment में survive कर सकते हैं, so these are called obligate anaerobes. Like Martiarius. अब इसको ये gut of some ruminant animals में भी मिलते हैं। अब इसको मिथानोजेंस क्यों कहते हैं? मिथानोजेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, so they are called methanogens. Now next is eubacteria. Eubacteria means true bacteria. They are characterized by presence of a rigid cell wall, and the cell wall is made up of peptidoglycan. They are most abundant. कुछ यूबैक्टीरिया है जो मोटाइल है, और यूबैक्टीरिया मोटाइल मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला है इसीलिए मोटाइल है, सो प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला इन सम यूबैक्टीरिया। नाउ दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये दो टाइप क्या है? एक है ऑटोट्रॉप्स एंड नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉप्स। Autotrophs means make their own food. Autotrophs means make their own food. And heterotrophs means take food from other. Heterotrophs means take food from other. So eubacteria are divided into two types basis on their nutrition. One, autotrophs make their own food, and heterotrophs take food from other. Now autotrophs. They are classified into two groups: photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. Now what is photosynthetic autotrophs? Photosynthetic autotrophs, they are unicellular, filamentous or colonial. And if colonial, their colonies are surrounded by a mucilaginous sheath. They perform oxygenic photosynthesis in paddy field to serve as an important biofertilizer. Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase soil fertility. Nostoc and Anabina can fix atmospheric nitrogen in a special cell. और ये special cell क्या है? This is heterocyst. So Nostoc and Anabina can fix atmospheric nitrogen in a special cell which is called heterocyst. वो special cell is heterocyst. They forms
algal blooms in polluted water bodies, which decrease the dissolved oxygen and increase BOD that causes fish mortality. Now next is chemosynthetic autotrophs. Bacteria oxidize inorganic substances like nitrate, nitrites, ammonia for ATP production. They play important role in recycling nutrients. Like N2P, Fe, etc. They are most abundant. Chemosynthetic autotrophs are most abundant. Example of chemosynthetic autotroph, lactobacillus. Next is heterotrophs. The vast majority of bacteria are heterotrophs. That is, they don't synthesize their own food. Heterotrophs means they don't synthesize their own food, but dependent on other organism or on dead organic matter. They are majority of heterotrophs are decomposers. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots. Bacteria causes diseases. What are the diseases? Cholera, typhoid, citrus canker. Now, heterotrophic bacteria further divided into two types. Number one, saprophytic, and next is parasitic. Saprophytic bacteria मतलब जो dead decaying पे dependent है. Dead organic matter. उसे saprophyte कहते हैं. और parasitic में लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंडेंट है फूड के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए, उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक. नेक्स्ट इज symbiotic bacteria. Those bacteria which live in a symbiotic manner with other organisms. Symbiotic manner. Now, symbiotic manner में जो other organisms के साथ रहते हैं उसे symbiotic bacteria कहते हैं, like plant, animal or fungi. It is a form in which the host and the pathogen both are benefited. Symbiotic relationship में host and pathogen दोनों ही benefited होते हैं. Example, Rhizobium. N2 fixation bacteria in legume roots. Rhizobium. Cyanobacteria, Nostoc, Anabaena oscillatoria. Now, Mycoplasma. इसे PPLO भी कहते हैं. PPLO मतलब Pleuropneumonia like organisms. They are smallest living organism. They are prokaryotes मतलब well developed nucleus नहीं है इसमें. They completely lack cell wall, so they are without any specific shape. They can survive without oxygen, and it is pathogenic to both plants and animals. Pathogenic मतलब disease cause करते हैं, so they are pathogenic for both plants and animals. Education is a right, irrespective of race, religion, caste or gender. In India, good schooling is only available in megacities and in urban areas to some extent. And all school and offline tuitions shut down because of horrifying corona pandemic. At this situation, most of the students can afford good education because of poor financial conditions, lack of awareness, poor network and internet connections, and also lack of good devices. To solve this problem, we have launched our new educational platform, Shantu. We will provide national level education with a very nominal cost that everyone can afford. Our course will provide short animated videos, highly effective notes,
NCERT highlights, practice paper, mock test, shortcut tricks and doubt clearing sessions and many more. For class 11 and 12, NEET, JEE, nursing and also for foundation classes. All videos will be in English, Hindi and Bengali. We'll provide psychiatric counseling, motivational and entertainment videos to keep our mind fresh. Also, we'll provide information about corona pandemic and the vaccination process. So make this revolution successful, subscribe to Shantu. You and us can make a change. Be the change. Hope we will meet there.